दीप्ति हम लाइव है जी। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। कुमारी मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बादलपुर के आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चित प्रकोष्ठ एवं शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यशाला में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती को नमन करते हुए कार्यक्रम के शुभारंभ के क्रम में माननीय प्राचार्य कॉलेज की आधार स्तंभ प्रोफेसर डॉक्टर दिव्यानाथ मैम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इसके उपरांत मैं इस कार्यशाला की रिसोर्स पर्सन डॉक्टर आरती शर्मा, हेड स्किल डेवलपमेंट सेंटर शारदा यूनिवर्सिटी का अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। वेलकम मैम। डॉक्टर आरती शर्मा इस क्षेत्र में बहुत ही एक्टिव रूप से जुड़ी हुई है। आप शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में स्किल डेवलपमेंट सेंटर की हेड है, साथ ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शारदा यूनुस बिजनेस सेंटर की कोर टीम की मेंबर है। आपने एमबीए के उपरांत मैनेजमेंट में पीएचडी की है तथा टाइम मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, एक्सटेंशन एक्टिविटीज के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ी हुई हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज हम सभी आपकी विशेषज्ञता का लाभ अवश्य उठाएंगे और यह कार्यशाला अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल होगी। इसी के साथ कार्यशाला में विभिन्न राज्यों से प्रतिभाग कर रहे प्रबुद्ध प्राध्यापक गणों और अन्य प्रतिभागियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। 7 राज्यों से बुद्धिजीवी हमारे मध्य जुड़े हुए हैं, यह हमारे लिए अत्यधिक हर्ष का विषय है। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्ट्रेस यानी तनाव आज सभी के जीवन का एक अविभाज्य अंग बन गया है। मानव जीवन का में थोड़ा बहुत तनाव होना तो स्वाभाविक ही है, लेकिन जब यह तनाव हमारी कार्य क्षमता, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित कर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगता है और वहीं से असली समस्या की शुरुआत होती है, क्योंकि इससे हमारे पारिवारिक, सामाजिक एवं व्यावसायिक जीवन की सफलता और असफलता प्रभावित होने लगती है। इसलिए तनाव प्रबंधन किया जाना अत्यधिक आवश्यक है। आशा है कि इस वर्कशॉप के माध्यम से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कर अपने जीवन में गुणात्मक वृद्धि कर पाने में समर्थ होंगे। कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूँ कार्यक्रम की अध्यक्षा माननीय प्राचार्य जी को, जिसके मार्गदर्शन और निर्देशन में इतने महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय का कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस विषय के चयन की सूत्रधार भी आप स्वयं ही हैं, इसलिए आमंत्रित है माननीय प्राचार्य महोदय जी आपको आपके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। ओवर टू यू मैम। डॉक्टर दीप्ति अपना स्क्रीन शेयर बंद कर दिए अभी। आरती मैम। हाँ जी, मैं अच्छा बंद करूँ स्क्रीन शेयर। ओके। माननीय प्राचार्य जी। धन्यवाद दीप्ति। आज की IQAC की इस नेशनल वर्कशॉप की रिसोर्स पर्सन डॉक्टर आरती शर्मा, महाविद्यालय का स्टाफ और विभिन्न राज्यों से जुड़े हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी पार्टिसिपेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। महाविद्यालय की IQAC टीम समय समय पर ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर वर्कशॉप्स आयोजित करती रहती है जो हमारे लाइफ स्किल्स से रिलेटेड होते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का कार्य करते हैं। आज हम स्किल इंडिया की तरफ तेजी से कदम बढ़ा चुके हैं और हर फील्ड में एक्सपर्टीज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना या उन चीज़ों पर फोकस करना जो हमारे स्किल को कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाने का कार्य करती है, उनसे डील करने के लिए हमें नित्य दिन अपने स्किल्स को अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। और इसी श्रृंखला में आज की जो ये वर्कशॉप है, जिसका शीर्षक है अचीविंग सक्सेस एट वर्क थ्रू स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड टीम बिल्डिंग, ये मुझे लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। ऑनलाइन पार्टिसिपेशन का एक ये फ़ायदा होता है कि हम जितने पार्टिसिपेंट्स को कॉलेज में नहीं अकोमोडेट कर सकते या जो किसी कारणवश वहाँ तक आने में सफल नहीं हो पाते, उनको हम इस माध्यम से जोड़ पाते हैं और यही कारण है कि हमने इसको ऑनलाइन करने का सोचा। और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएं, ये भी इसके पीछे एक मकसद था। जैसा अभी डॉक्टर दीप्ति ने बताया कि स्ट्रेस जो है वो हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग है, उसी में मैं थोड़ा कुछ अपनी तरफ से भी ऐड करना चाहूँगी कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो हम लोग के जीवन का एक अभिन्न अंग है ही,
लेकिन उसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा भी होता है, क्योंकि जब हम किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहे होते हैं या कोई इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस स्ट्रेस की वजह से हम फोकस्ड होते हैं, अलर्ट होते हैं और शायद अपना बेस्ट दे पाने के लिए सक्षम हो पाते हैं। लेकिन हाँ, स्ट्रेस इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि वो हमारे जीवन पे हावी हो जाए और हमारी हेल्थ को अफेक्ट करने लगे, क्योंकि जैसे आप सबने सुना ही है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसलिए मन का चंगा रहना बहुत आवश्यक है। और खास करके आज का युवा वर्ग जो कि बहुत ज्यादा तनाव से जूझ रहा होता है कई कारणों से, कहीं उसके सामने कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, कहीं जीवन में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पाने की इच्छा जो है वो बहुत प्रबल होती है। इन चीजों के चलते वो बहुत ज्यादा तनाव से एक छोटी उम्र में ही उसे गुजरना पड़ता है। तो इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे कि हम थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो लें, अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़्यादा ना लें कि वो हमारे जीवन पर हावी हो जाए। मेंटल हेल्थ इश्यूज, खास करके आज ये कोविड पैंडेमिक के बाद एक एपिडेमिक फॉर्म में उभरने की पूरी पूरी इसकी पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। तो इसलिए ऐसे वर्कशॉप्स जो हैं वो इन चीज़ों में हमें इनसे बचने का जो है वो एक रास्ता बताती हैं। जैसे हम देखें तो अगर एक आम आदमी के जीवन में जो एक दिनचर्या है वो क्या होती है, हम आजकल रात में एक खास समय पे ना सो करके लेट नाइट सोने की आदत सबके लिए आम हो चुकी है। उसकी वजह से हम सुबह देर में उठते हैं। उसके बाद फिर हमें ये लगता है कि हम काम पे देर में ना पहुंचे, इसलिए हम भाग भाग कर जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और निकलते वक्त शायद ऐसा अक्सर सभी के साथ होता होगा कि हम मोबाइल अपना डाइनिंग टेबल पे भूल जाते हैं। उसकी वजह से हम रास्ते में तनाव में होते हैं और रास्ते में अगर कहीं आपकी कार किसी से भिड़ गई तो फिर रोड रेज, जो एक नया शब्द है हमारे जीवन में आज बहुत प्रचलित हो चुका है, हम उसके शिकार बनते हैं। ऑफिस में हम फोन करके बता भी नहीं सकते कि हम देर में पहुंचेंगे, क्योंकि मोबाइल तो घर में डाइनिंग टेबल पे छूटा हुआ है। तो हम पहुंचते हैं ऑफिस और हम पूरी तरह से तनाव में जूझे हुए होते हैं उस समय तक। जैसे काम पे आप बैठते हैं फिर काम का तनाव, और खुदा न खास्ता किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया तो फिर वहां पे भी दिन बुरा गुजरता है। ऐसा दिन गुजरने के बाद जब आप घर लौटते हैं तो परिवार के साथ आप एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रह पाएं और अपनी शाम बिता पाएं, ये एक मुश्किल चीज हो जाती है। फिर जब आप रात में अच्छी तरीके से इस पूरे दिन के तनाव के कारण नहीं सो पाते हैं तो फिर आप सुबह देर में उठेंगे और ये विशेष साइकिल जो है वो दोबारा से रिपीट होता रहेगा। तो इसके चलते एक नियमित जीवन शैली को अपनाना और उन चीजों से दूर रहना जो हमें तनाव ग्रसित करती हैं, ये बहुत आवश्यक है। खास करके एक बात यहाँ और इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जीवन का लगभग 30 से 35 वर्ष अपने मतलब कार्य करते हुए गुजारते हैं। तो जब हमारा पूरा दिन, चाहे आप 9 to 6 जॉब में हो या 10 to 5 के जॉब में हो, जब इतना वक्त आपका आपके कार्यस्थल पे, आपके वर्क प्लेस पे गुजरता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका जो वहाँ का काम है वो सिस्टमैटिक हो, टारगेट्स आपके बने हुए हों और उनको कैसे अचीव करना है वो बातें आपको पता हो। और साथ करके एक जो टीम बिल्डिंग की बात है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर मैंने अपने अनुभव में ये देखा है कि आप जब लोगों से काम लेते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अकेले रह करके तो बहुत अच्छा काम करके दे देते हैं, लेकिन जब उनको 4-5 लोगों के साथ एक टीम में काम करने के लिए कहा जाता है तो वहां पे फ्रिक्शन शुरू हो जाता है और कहीं ईगो क्लैशेस होते हैं, कहीं पे आप लोगों को की जो एक्सपर्टीज है उसको समझ करके आप काम नहीं कर पाते। यानी कि टीम में काम करने की क्षमता आपकी कम होती है अकेले करने की ज्यादा। वो भी सही नहीं है, क्योंकि जब आप डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करेंगे तो आप उसकी वजह से भी तनाव में रहेंगे। तो ये सारी बातें शायद मुझे लगता है कि आज की जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर आरती शर्मा वो और विस्तार से बता पाएंगी, क्योंकि इसमें उन्होंने अपनी जो एक्सपर्टीज है वो हासिल की है। और शारदा यूनिवर्सिटी के साथ हाल ही में हमने एक MOU साइन किया है, उसके अंतर्गत आज ये पहला कार्यक्रम है जो मुझे लगता है कि काफ़ी सभी के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। We look forward to more such collaborations in future.
Thank you so much. थैंक यू मैम। हमारी रिसोर्स पर्सन को सुनने के लिए हम सभी बहुत उत्सुक हो रहे हैं। आपको सुनने से पूर्व ही लग रहा है कि स्ट्रेस का लेवल थोड़ा कम हो रहा है, तो निसंदेह सुनने के बाद हम सभी अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अधिक समय न लेते हुए मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर आरती शर्मा जी को। ओवर टू यू मैम। Thank you so much, Deepti ma'am. Thank you so much, Dinesh sir, Divya ma'am. Thank you so much for the wonderful introduction. और मुझे लगता है आज जो स्ट्रेस का एक पूरा ये एक सेशन है, शायद दिव्या मैम ने इसको पूरा एक क्रक्स बता ही दिया कि कैसे स्ट्रेस शुरू होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। सो एक्चुअल स्ट्रेस तो होता वही है ना। मैं एक बार एक स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी दीप्ति मैम, एंड देन आई विल स्टार्ट, है ना। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके हाँ जी, माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? जी मैम। Okay, fine. See, good morning to all of you. Very wonderful good morning to all of you. I'm Dr. Aarti Sharma from Sharda University. As already, Deepti ma'am has given such a beautiful introduction. So I will straight away come to the topic. We are here for the session to discuss how can we overcome stress at work with the help of our co-workers, with the help of our team members. See, if I talk about stress, everybody has stress in the life. And what is stress basically? It is nothing, but it is just a mental tension which is there because of your, challenges which are there in the life. And these challenges, sometimes when we are not able to overcome, that becomes threats to our life. And it gives a lot of mental pressure to us. And fact lies, everybody experiences this stress. The only difference, that degree varies. Somebody experiences a less stress and somebody experiences a more stress. Moreover, sometimes we are not able to figure out that we are stressed. So in today's session, I'll cover up how you will figure out that you are stressed, or how you will become self-aware. So self-awareness is the first thing which can help you out to know that you are stressed. So before coming to the techniques, I would just like to, tell you the various different kind of stress, so that you will be able to correlate that are you actually stressed? Do you have stress because of these reasons? So first stress is a physical stress. See, physical stress is when we have some pains, when we have some aches like headache, or sometimes we have some pains in different areas. So, or our heartbeat goes high, heart rate goes high. Sometimes we feel shivering because some meeting is scheduled or some important event is scheduled. So even all these are part of your physical stress. So I'm sure, when I am discussing all these things with you, you need to keep all these types of stress in mind, because after this, you would be doing an exercise where you will write on a piece of paper what stress you have, or do you experience any such kind of stress at your workplace. It can be in your personal life as well. So when we talk about, pains, like I have my back pain, shoulder, sometimes my neck gets stiff. So all these are stress. We don't realize, but it is a stress. Sometimes, just listening to the voice of ambulance, or sometimes when you are busy doing something, your mobile keep ringing. You feel that, your neck gets stiff. You got some pain in shoulder or hand. All these are your physical stress. And we don't realize that this is because of stress. Next is your mental stress. See, mental stress is a common stress, which again you can, recognize very easily. Sometimes it happens that we keep forgetting things. As Divya ma'am told you, aap ghar se nikal rahe ho and you forgot your mobile phone. You forgot the key. Sometimes we cannot recall the name of the person. Sometimes we forget somebody's contact number. We forget, sometimes the student's name. So these are the common examples we can say for the mental stress. When you are experiencing any such thing which is related to your memory, that you're forgetting something, you're not able to concentrate. You want to work, but you're not able to concentrate.
because you feel that, I have lots many things to do. Shall I do this or shall I not? But you're not able to concentrate, whatever the reason is. You feel a lot of anxiety is there. So if you come across any such kind of symptoms, you need to realize that you are undergoing a mental stress. Next is your behavioral stress. See, the two stress that I told you, physical and mental, these stress are very common and you can easily diagnose yourself if you're undergoing such kind of stress. As I told you, pain, आपको कहीं पे दर्द होता है, आप समझ सकते हो, it is because of stress. And as I told you, mental stress, you're forgetting something, memory related hai, concentrate nahi kar pa rahe ho. So that's a mental stress. So these two can be diagnosed easily by the person. Now this behavioral stress, this is a stress which is not very common and very difficult to, diagnose yourself. Just tell me one thing, any one of you, have you ever seen that, sometimes there is a change in our eating habit? Like, I don't eat much, but sometimes I just binge on food. I want to eat first, something sweet. Then I want to eat spicy. Then I want to have juice. Another moment, I want to have coffee. I'll keep on, eating or drinking something or other, wherein probably that's not a regular part of my appetite and I don't need it. But just tell me, कभी ऐसा होता है किसी के साथ that, हम जितना खाना नहीं है उससे ज्यादा भूख लगती जाती है, खाते जाते हैं, या टीवी देख रहे हैं तो मतलब टीवी ही देखते जाएंगे, और if we are watching mobile, so we'll keep on scrolling different videos no matter if it is of our use or not. I would request participants, if you can interact, then only I'll come to know कि stress है या नहीं है. Nobody? दीप्ति मैम, अच्छा आप ही बता दो, कभी ऐसा होता है यू फील लाइक ईटिंग ज्यादा, बस अब मुझे ये खाना है, अब एक आरती, मैंने पार्टिसिपेंट को म्यूट की परमिशन नहीं दी हुई, अगर आप कहें तो अनम्यूट करने के लिए, लेकिन डिस्टरबेंस बहुत होगा. नहीं, ठीक है सर, इट्स फाइन, आई थिंक सो लास्ट में हम क्वेश्चन सेशन कर लेंगे, देन बेटर होगा. अगर आपको इंटरेक्ट होना है तो मैं अनम्यूट अलाउ कर देता हूँ, डिस्टरबेंस होता है. नहीं रहने दीजिए सर, आई थिंक फिर हमें बीच में मॉडरेट करना पड़ेगा टू अनम्यूट. इट्स ओके, मैं दीप्ति मैम से इंटरेक्ट करूंगी ना. दीप्ति मैम आप बताइए. हाँ मैम, ऐसे स्ट्रेस में तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा खाऊं, लेकिन जब स्ट्रेस नहीं होता, रिलैक्स नहीं, आपको तो पता ही नहीं है कि वो स्ट्रेस है, आपको नहीं पता है वो स्ट्रेस है. बट कोई ऐसा दिन होता है जब आपको लगता है कि अब मैंने थोड़े से नूडल्स खा लिए, अब शायद मुझे थोड़ा पेस्ट्री खाने का मन है, अब मुझे थोड़ी सी कॉफी पीनी है, नहीं अब मुझे थोड़ा शायद आइसक्रीम भी खानी है, कभी ऐसा होता है? हाँ मैम, लगता तो है. वही बिहेवियर स्ट्रेस है. बट thing is that we are not able to diagnose ourselves. So whenever you are undergoing any such day, so that means you are undergoing a behavioral stress. Acha, it is not कि आपको ज़्यादा ही खाने का मन होता है. Probably sometime you want to skip your meals as well. आपको नहीं भी खाना होता. So this is also a part of the behavioral stress. Sometimes you might see a difference in your sleeping, habit. You just want to sleep. You're not tired, but you will just laze around. You just want to sleep, whether you actually need it or not. But there is a change in your sleeping pattern as well. Sometimes you don't want to talk to people. You just want to stay in isolation. Though back of the mind we says कि ये तो इनको कुछ समझ ही नहीं आता, मेरे को तो इनसे बात ही नहीं करनी. But it is not because they don't understand. It is because we are undergoing some kind of stress. So whenever you see any day wherein, there is a change in your sleeping habit, change in your eating habit, you want to avoid people. So just keep in mind that you are undergoing a behavioral stress. Next is your emotional stress. So now this stress is also very difficult to understand or diagnose yourself. So this is a stress where all of a sudden, you start feeling very moody. You feel irritating without any reason. You don't know the reason, but you feel irritating. Now it is your body that, which try to cope up with it and try whether to fight or flight, whether, to come up with it or probably take it. So this is again an emotional stress. So whenever you see any change in your mood streams without any reasons, so that is called your emotional stress. And even this kind of stress is also difficult to diagnose. Next is techno stress. This is a new term which
we were not using before, COVID. Post COVID, this term is explode more. Sometimes we, face a stress because of the technology as well. Like like during COVID, we were asked to take classes online, create a room for the students, or create some assignments which they can do online. So this is a techno stress, and people faced, people started facing this kind of stress, which affected their productivity as well. So sometimes we are more comfortable, writing on a piece of paper, but when we are asked to present it or use any kind of technology, we feel little stressed. So that's also a techno stress. And as ma'am told you, Divya ma'am, that all the stress are not distress. So if you have a stress, does not mean that, it's a distress situation. We say that stress is also a good stress, a positive stress. And we call it as an eustress. So eustress is a stress which make you work better, which increases your productivity. Like sometime it happens that, we are planning a trip. So we feel nervous that have we packed certain things, kuch rahe to nahi gaya, but that is out of excitement. So that excitement is your positive stress. First day of the job. So first day of the job, we are nervous, but that nervousness is because of excitement. My new day, my new assignment, my new colleagues, my new workplace, my new friends. So this stress is always not related to a distress situation. It is related with a positive stress as well, and we call it eustress. So it is good to have stress as well. So whenever, every day, you just need to see what kind of stress, you are undergoing. Are you undergoing any kind of stress? And if it is a stress, what kind of stress? I'm sure by now, since you are aware about the negative stress, about the positive stress, about physical, mental stress, but problem lies that we are not able to figure out that we are stressed. Why? Because we are not in the self-awareness mode. Our body do not accept that we are stressed. Somebody might come and say, Deepti ma'am, aaj to aap bahut stressed lag rahe ho. But you will say, no, everything is fine. I am good. Everything is good. Kyunki hame pata hi nahi chalta hai na. So it is all because we are not in the self-awareness mode. Our body cannot accept. So what I want all of you to do one small exercise. Deepti ma'am, is it good to do some breathing exercise to make your body, to create some self-awareness? Sure, ma'am. Sure. Okay. See, I think I will not be able to play a music over here, but we can do it without music as well. I would request all the participants to please close your eyes, and we would be doing some deep breathing exercise by which we will, make ourselves aware of each and every body part, so that after that we can realize that we really do have stress and what kind of stress it is. So this is a body scan exercise, a simple deep breathing exercise. You just have to close your eyes. I am not closing my eyes because I just want to see all of you, but all of you can close your eyes, and a deep breathing we would be doing, inhale and exhale. So in a deep breathing, inhale. Concentrate on your forehead. Concentrate between both of your eyes, your eyebrows, and just feel that you are able to see because of them. Exhale out. Take a deep breath again. Feel your shoulders. With the exhale, feel your shoulders are light. All the pain, all the stress,
All the tension at the shoulder is going out. Take a deep breath again. Let all the thoughts, whatever is coming, keep coming to your mind. Just concentrate on the breathe. Breathe going to different body parts and feel the heat, coolness, whatever is your breath, just feel it. Take your breath, feel your arms. Feel some tickling sensation is there at the fingertips. Exhale out. Inhale again, deep breathe. Deep breathe. Till the abdomen. Feel your abdomen, feel your lungs, your heart, your abdomen, entire thing which is related to abdomen. Release all the stress in the abdomen with the exhale. Exhale all the stress in the abdomen. Deep breathe again. Deep breathe till your thighs. Concentrate on your breathing going to your thighs. Exhale all the tension, all the pain which is there in your thighs. Exhale all the tension. Deep breathe again. Take the breath till your knees. Exhale all the stress, all the pain in the knee area. Deep breathe again till your ankles. Exhale all the stress, all the pain, tension in your ankle areas. Deep breathe again till your feet. Feel some sensation on the fingers, toes of your the tips of your toes. Exhale all the tension. Deep breathe again. Now just feel whole of your body that you are grounded. Feel of your surrounding and exhale out. Rub your hands. Put on your eyes. And you can open your eyes. Okay. Just tell me, are you feeling little relaxed after this? Little relaxed, your body is feeling light, like your shoulders, which were stiff, neck, which was stiff because you keep working, we are always on the laptop or we are doing some household chorus work. So we feel stressed. So after, when we realize each and every body part and we release the tension which is there in the body part, what we are doing, we are realizing our own self and we come to the self-awareness stage where we are aware of each and every body part. We are aware of our breath, where it is going. So you need to practice this exercise so that, every day, probably 5 minutes, 10 minutes, if it is possible, you can realize that each and every organ of your body and you can release the tension over there. As I told you, the biggest challenge with us is self-awareness, that, we are not aware what stress we have or we are not stressed. We always feel that I live stress-free life. I don't have any stress. But fact lies, all of us have stress, some or other stress, be it because of technology, be it a physical stress, be it a mental stress. But yes, we have stress. So first thing that we need to do is we need to identify the source of stress in our life. This source of stress can be it can be anything. Do you have stress because of your any particular habit? Do you have stress because of your personal life? Do you have stress because of your attitude? Do you have stress because of your colleagues or because of some reason at the workplace? So what you need to do is, first step is you need to write down that stress you have. While writing down the stress, all of you, I would request all of you to please write down that stress you have. While writing down the stress,
keep, ponder over the thoughts, like these thoughts that you are writing on a piece of paper. Do you think that these stress are temporary, or do you think that, they will last long in your life? Do you think that these are integral part of your life and they make you crazy at home and workplace? And also think that, do you think that you blame people because of this stress? So first thing, stop doing it. You need to take responsibility yourself of these stress. If you think that it is because of people, you blame people, you think that these stress cannot be, these are permanent in my life, nobody can change this, then yes, you're right, you will not be able to cope up with the stress. So first, you need to remove all these thoughts from your mind, and then make a journal, start writing on a piece of paper what kind of stress you have. Do you have some, now you know the different type of stress, please write whether you have some physical stress. It could be a pain in the neck because you drive a lot, so on in your hands sometime while working on the laptop, so in your fingers, or headache, whatever stress you have. Is it a physical stress, or if it is a mental stress, some emotional stress, what kind of stress you have? So please write down that stress, all of you. I want all the participants to write down the stress. Are we done? Okay. So next is, see, you've written this stress. We will do another exercise to remove this stress as well. But all of you should be ready with this piece of paper which has some stress written on it. It can be physical, mental, emotional, technological, any kind of stress which you have in your life. So you just need to write it down. Second thing is that, you need to cut out some unhealthy ways to deal with the stress. What are these unhealthy ways to deal with the stress? See, sometime when we are stressed, we start smoking, we start drinking, and as I told you, we start binging on some junk food ki ab to bas matlab kuch to junk khana hai, and it is all because of stress. As I told you, if you're watching a TV, you will keep on watching, binge watching, as we say. Netflix pure din hi chal raha hai, so binge watching sometime, scrolling your mobile phone without any reason, kisi ki video, but you just want to watch that video one by one in the sequence. So these are some unhealthy ways through which we want to, deal with the stress. I am stressed, so I cannot work, I cannot do this task right now, so I am watching this TV. I am stressed, so I just cannot do anything. पर आप क्या कर रहे हैं? आप मोबाइल पे लगे हुए हैं, ठीक है? I am stressed, I cannot do anything, but you want to eat some junk food. Or I told you, the other thing could be if you are into the habit of drinking or smoking. So sometimes people adapt those unhealthy, practices as well, ways as well, to reduce the stress in the life. But these things, they do not reduce or cut down the stress of your life. Rather, you need to practice some healthy ways to reduce the stress. And what are those healthy ways? See, practice, first of all, 4 A's in your life. If you want to manage your stress, 4 A's are must: avoid, alter, adapt, and accept. So you need to take care that you are adapting. These 4 A's should always be there in your mind: avoid, alter, adapt, and accept. So what we need to avoid overwork. Sometimes we are a person who is always yes, boss, yes, friend, yes to everybody. We are not able to say no. If you feel that you are overloaded with the task, your boss, or the colleague is asking for the favor or help also, but you yourself is stressed, try to say politely, but no. You need to say no. Practice saying no if you are overloaded, if you are stressed. What happened in the good faith, we cannot say no, and what it takes a toll on us. We get stressed because we can't say no, so we are yes every time. So that is not a good scenario. Try saying no. Then avoid people who gives you stress. See, sometimes, there are people who are little negative in approach. That, whenever you talk to them, you feel low, you feel depressed.
So what you need to do when you know such kind of people in your life, you need to avoid them. Try to avoid all the conversation with them. Avoid meeting them as well if you can, but don't participate in their conversation. And then third thing in avoid is you need to take control of the environment. See, sometimes we are not stressed. हम टीवी पे एक ऐसी न्यूज लगा लेते हैं कि न्यूज में आता है अब तो तबाही होने वाली है, दुनिया खत्म होने वाली है, या फिर कोविड के टाइम पे आधे लोग डिप्रेशन में चले गए. व्हाई? बिकॉज नोइंग दोज डेथ रेट्स एवरी डे, अब इतने हो गए, अब इतने हो गए, अब इतने हो गए, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. आप उससे बाहर निकलो. So you are creating environment yourself. So you need to create environment which is healthy. So don't go into such kind of environment. अगर कोई ऐसी news है that hurts you, और probably जिस news से आपके ऊपर कुछ negative effect पड़ता है, switch on to the channel, channel. Sometimes कुछ लोगों को traffic से stress होता है कि आप ट्रैफिक में जा रहे हो, इतना दे विल कीप हॉन्किंग, और किसी को सुनाई नहीं दे रहा, पर वो अपनी गाड़ी में बैठे बैठे आगे पीछे वालों के लिए इतनी बातें निकाल देते हैं कि बस दे गेट स्ट्रेस. बट उनको हॉर्न मार मार के कहीं तक आपका मैसेज नहीं जा रहा, बट यू गेट. अगर इफ यू आर सच काइंड ऑफ पर्सन जिसको ट्रैफिक से स्ट्रेस होता है, तो आपको क्या करना है, आपको एक लंबा रास्ता लेना है, चाहे वो रास्ता लंबा हो पर वहां पे ट्रैफिक कम हो. डोंट गो फॉर शॉर्टकट जहां पे ट्रैफिक ज्यादा होंगे. सो यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर एनवायरमेंट. देन इज यू नीड टू पेन डाउन एंड लिस्ट डाउन what are the things that you're supposed to do. There are many tasks in your life which are least important, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो important ही नहीं होते बट हमें करने होते हैं. So every day, or whenever you're stressed, you need to pen down those everything, prioritize and analyze whether these are important. Do I need to do it, or can I eliminate it? If you think you can eliminate it, just eliminate it. Second A is alter. You need to alter the situation. How can you alter the situation? Reframe the problem. See, sometimes when you cannot do anything, what you need to do to deal with the stress is alter the situation. As I told you, reframe the problem. Reframe the problem is that, you need to see a positive aspect of any problem. As I told you that, कि कुछ लोगों को ट्रैफिक से बहुत प्रॉब्लम होती है. मोमेंट दे गो into a traffic, they get stressed. But take a positive part. Like if I tell you personally, I travel 60 kilometers one side a day. And people ask me, Aarti, it is really stressful. But I say, no, I enjoy this. Because I feel this is the only me time. When I don't have my kids, I don't have any work to do. I cannot, switch on my laptop. So what I do, it is fixed that 1.5 to 2 hours, I switch on to the music and I enjoy my music. So that is not a stress for me. I enjoy that time. So you need to reframe the problem. Look forward for the positive part. As I told you, traffic सबके लिए problem है. But मुझे traffic बहुत अच्छा लगता है कि ये 2 घंटे is me time. ना किसी की कुछ है ही नहीं, टेंशन ही नहीं है, कुछ काम कर ही नहीं सकते. So I'll just enjoy my music. So I enjoy my music while driving. So this you need to understand. जिस भी चीज से आपको stress है, try to reframe the problem. Next is look at the bigger picture. If some task has been given to you today, probably it is challenging, but you need to look a bigger picture that after 4, 5, 6 months, will it give you something else? Will it enhance your profiling? आज आपको बोल दिया आपको स्कोपस का पेपर लिखना ही लिखना है, 4 महीने की डेडलाइन है. You get stressed. I cannot write. This is very bad. They are cruel. They don't understand teachers' problem. बच्चों को पढ़ाओ, assignments, then CO, PO, LMS पे update, iCloud. On the top of that, they expect कि Scopus का पेपर भी लिख दूं मैं 4 महीने के अंदर. But just look at the bigger picture. If you do it, then your profile will be enhanced, and in future you will have a big profile. And irrespective of your age, at the young age, you can have a big profile. So you need to understand the bigger picture sometime. Then you need to practice gratitude. Sometime, we keep cursing people, but moment we start practicing gratitude, thank you to everybody, in your personal life, in your professional life, half of the stress is gone, because then we don't keep grudges
about for our teammates, for the colleagues with whom we are working. We don't keep any grudges. And when you will not have any grudges, so stress तो वैसे ही चला गया अपने आप. Stress का कोई काम ही नहीं है आपकी body में. So you just practice gratitude. If you cannot do it in a very professional manner, you can do it anytime, sitting at your workstation, driving, cooking, whatever you're doing. You just need to be thankful to everything, to the God, to the colleagues, to the friends, everybody. Next thing you need to do is accept. Third A is accept. See, there are certain things that you cannot change. So you need to accept. Sometimes we undergo severe illness, but now we get stressed that how can I get such kind of disease? What will I do now? I think my life is over. No. You need to be positive and accept that this has happened to you. Now you just need to find out the ways how you will come out of it. So moment you practice this 4 A's, which is avoid, adapt, accept, and alter, you'll be able to overcome the stress. I think I missed out alter. Sometimes alter is you need to change the situation. See, we have a lot of emotions with us, but sometimes we do not speak. So that keep on piling up. So when the emotion gets suppressed, the outcome is stress and depression. So you need to express yourself. If you have any feeling for anybody, just express it. If you do not like somebody's attitude, politely, but express it. Please don't do this with me. I really do not like it. Or I need your support. Please, give your support to me for this particular work. But don't suppress your feelings. As ma'am told you, कि कुछ लोग अकेले अच्छा काम करते हैं, but they cannot work in a team. Why? Because they cannot express. उनको लगता है कि इसको बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, मैं खुद ही कर लेता हूँ, which is a wrong practice. So you need to express yourself, and you need to compromise as well. Sometimes, it is not that always people will listen to you. So sometimes you need to come to some midpoint where both of you, both the colleagues, agree. So you need to have that attitude of compromising as well, that it's okay. If not 100% mine, it's okay. 50% is also okay. So you need to compromise as well. You need to be assertive. See what happened. Sometimes we do not speak. You don't have less time. You have very less time with you, but colleague of you come and sit with you because he or she want to chat. They don't have work. And out of the good faith, you're not able to tell that, I have some very important tasks. I just cannot, spare some time with you right now. So you need to practice. You need to be assertive. You need to tell them that I don't have much time right now. I'll meet you sometime else. I have some important tasks. So you need to be assertive. You need to decide, whether you can give your this time or not. Then as you need to balance your work and family. If you have work and you have family, decide your work in such a manner that your personal life does not get hampered. Try to complete your work in the weekdays, or if it is going over the weekend, then plan some quality time with your family later on, so that you can cope up with the, cope up, or you can manage the time which you have, which you could not spend with them. So this is something that these 4 A's, if you practice these 4 A's, you will be able to manage stress very easily in your life. And next is you need to get moving. Sometime when you're stressed, you need to try some kind of exercise, physical exercise. Physical exercise you can do with the help of the music. Play a good music, few dance steps, or you can follow somebody's dance steps, or few, just Zumba steps, or any other steps, or any other exercise that you can do. If not exercise with the music, go to a grocery store without your car. Just walk down and
do your grocery shopping. So this is also a physical exercise. So you need to take care of the physical exercise. Generally, what do we do these days? We move out from the house, we take a lift, sit in the car, and then, we go and come back. Don't do this. The day you're stressed, leave your car keys at the home. Don't use the stairs. Don't use the lift. Use the stairs and walk down to the store, do the grocery, whatever you want to do, and come. So this is again a physical exercise. If you will practice this, then also your stress level will come down. You need to connect. Next is that you need to connect with the people, connect with the others. You need to go and you need to do the face-to-face interaction with them. See, you need to understand that, if you will not discuss your feelings, your problem with the people, it will suppress and it will create depression. So you need to go and talk to the people, to your friends, your family, anybody to whom you can. And if you do not have, you can simply call somebody. It's just that person should be a good listener. You just need ears in the time of stress, nothing else. Somebody can do something for you or not, that's a different story. But if somebody can give you ears, your half of the work is done. You'll be able to manage the stress. You'll be able to come out of the stress. Then make sure that, you're taking some time for fun and, relaxing as well. Plan some trips often with your colleagues, with your family, with your friends. Moment you start enjoying all these things, you will feel life is beautiful and you don't have much of stress in the life. But what we do, we keep, we have some or other excuse. We can't plan a trip because right now it is my child's exam. I cannot because I have some work, I have some meeting. So because of this, we keep, delaying such kind of activities, but this is much required in our daily life. You need to plan some fun and relaxing trip with your friends, with your colleagues, with your family members, with your kids, and you need to manage time better. The moment you manage your time, you'll be less stressed. You need to maintain a healthy lifestyle. As I told you, eat good, enjoy good music, go out, talk to people, plan a trip. So you need to have a healthy lifestyle. Or if you can practice, then, getting up early in the morning, doing some kind of meditation, or probably just a walk, and after dinner, just a strolling after a dinner. Don't do a rigorous walk, just a strolling, just 2 strolling after a dinner. That's more than enough. So you need to balance your life with some healthy lifestyles. And if you learn how to relieve your stress at that particular moment, sometimes what happens that, whenever we have any hot discussion, say for example, we are coming from our home with our spouse, with the kids, we keep thinking about it, and we bring that stress to office also. So Deepti ma'am, घर पे बच्चों के साथ कुछ हुआ, फिर यहाँ पे आके आपने वो नेहा त्रिपाठी मैम दिख रही है मुझे यहाँ पे, नेहा त्रिपाठी मैम के ऊपर भी उतार दिया, पर वो स्ट्रेस तो बच्चों का था, बट कहाँ पे आया? नेहा त्रिपाठी मैम के ऊपर, उनकी कोई गलती भी नहीं थी, है ना? So what we need to do, we need to relieve that stress at that moment only. बच्चों से लड़ाई हुई, या कुछ भी हुआ, any discussion which create a negativity in you, what you need to do, आप कोई पुरानी कुछ फोटोग्राफ्स देखना शुरू करो, कुछ कोई पुरानी ट्रिप की फोटोग्राफ, बच्चे का कोई अचीवमेंट जो हुआ था, व्हेन यू फेल्ट हैप्पी अबाउट इट, वो सोचना शुरू करो. जैसे ही आप कुछ भी ऐसा देखोगे, आप ऑटोमेटिकली उस मोमेंट से बाहर आ जाओगे और वो स्ट्रेस नेहा त्रिपाठी मैम के ऊपर नहीं उतरेगा, है ना? वो वहीं खत्म हो जाएगा. ऑफिस आने से पहले that stress is over. So you need to get out of that particular moment. So these are different, as till now I've told you that there are various different kind of stress. You need to be self-aware what kind of stress you are undergoing, and you need to practice all the tips that I told you, which will help you out to come out of the stress. But then now the point is how you will come out of it. Are there any kind of techniques? We have many techniques as well, because we don't have much time. Ma'am, what time session gets over?
Is it a 1 hour session? And 1.5 hour. Acha, theek hai. So now this we have some techniques through which if you use these techniques you can come out of it. And what are those techniques? Some grounding techniques are there, the deep breathing techniques are there, like self-awareness. When you breathe, just feel each and every part of your body. That's how you will be able to come out of the stress. Notice and name the stress. And being kind to yourself is another technique. Gratitude, I told you, is another technique. Now, all of you have written that, all of you have that piece of paper where you have written that stress with you. All of you have that? Okay. Now we will practice a technique which is being kind to yourself. See, I told you that, all of you require a friend in your life. No matter, how strongly you say, I don't need friend, I don't need that kind and caring person. So all that is myth. All of us need that kind and caring friend in our life, right? And most of us have already earned that kind and caring friends till now. But whenever we need such kind of friend, we are not able to connect with them. Whenever we undergo a hard time, whenever we are stressed, we don't get hold of such kind of friend. Why? It is not that they don't want to give you support. It is because probably, they are also occupied in something which is very important going on in their life. So because of this, they're also occupied. So they're not able to give that kind of support to you. So what this technique is all about, this technique makes you learn how you can be friend to your own self. And if you learn how to be friend to yourself, you might not need kind and caring friend in that particular distress situation. Let me tell you once again, you always need a friend. Does not mean that you will not have any friends now. You need to have a friends. But whenever in the distress situation, you need a friend and you don't have one, then this technique will help you out, where you will become your own friend and you can help your own self. And this technique is called being kind to your own self. So for this, all of you have that piece of paper written with you. Okay. Now what you need to do, how will I get the confirmations? Okay, it's okay. So I assume that all of you are able to hear me. I'm audible to all of you, right? You just need to follow my instruction with that piece of paper in front of you. And we'll try if we can reduce that particular stress which is there in your life. Being kind to yourself, being your own friend. See, as I told you, when you need a friend, you don't have friend. So you now will learn how to be your own friend. What you need to do, just put your one hand in front of you and just remember this hand. This is a same hand which you have used. Just close your eyes and, then start practicing. Close your eyes and put your hand forward. Okay. And then now start thinking of this hand. This hand you have used many times to heal somebody. This hand you have used sometime to give food to someone, medicine to your close one. This same hand you have used to hold a baby. This same hand you have used to console your friend sometime whenever your friend was in distress. This same hand you have used to heal somebody's pain, your kid's pain or somebody's pain, sometimes massaging it over the pain area so that they can, you can soothe out the pain. So this is the same hand. Now we will do the manifestation. We'll do the affirmation where we will use the same hand to heal our own self. So what you need to do now, just put this hand at
place this at any area of your body. It can be your heart. If you have any pain, you can put it at the area of the pain as well. Abdomen, heart, your shoulder, or if you don't understand anything, you can put over your forehead as well. Place it over your forehead. Now close your eyes. Place this hand over your forehead and give some pressure, a pressure with the hand on the place where you have placed it. Now just remember that this is the same hand that you have used to heal your friends, to give food sometime to your parents, to your kids, medicine to your parents, to your kids. And this is the same helping hand which you have been using for others. Now take a affirmation, take a confirmation yourself that this hand is with you whenever you are in pain. Whenever you are in pain, you just need to understand that everybody undergoes a difficult situation, a painful situation in their life. It's just that you need to understand that you need to come out of it. So this is the same hand which will help you out whenever you are in pain. So give affirmation to your own self that whenever I am stressed, I am in pain, this hand is with me and this will help me out to come out of the pain. No matter whatever the situation is, it can be most difficult and most challenging situation, but yes, I will come out of it. Take a deep breath, your back straight, stretch your body, your feet on the ground, push the ground with your feet and exhale. Take a deep breath again and feel the power of your own hand. This hand is always with you. This hand will help you out in the time of distress. This hand will help you out whenever you are in pain. So you need to take in information. Whatever is your stress, now think of the stress. Keep breathing, deep breathe. Put your hand wherever is the place, whatever the place you want to heal, and think of the stress that you have. Think of the stress and just believe that this powerful hand, this is more than enough to cure you whenever you need any kind of help from the friend. So not having a friend at your side is not a problem, because now you are your own friend. So you have given affirmation to your own self. You have manifested that this hand will help you out whenever you are in distress situation, whenever you need a friend. Think of your problem again with the deep breath. Let that thought come to your mind and exhale all that thought out, stress out, thinking that that situation has all gone and you're able to heal your own self. Your hand was enough to heal yourself. If you're not able to do it, again, take a deep breath, your back straight, stretch your body a bit, put your feet on the ground, push the ground with your feet, and now exhale that all the pains and the thought which were coming in your mind because of that particular stress that you have written on the piece of paper. Now, rub your hands, put on your eyes, open your eyes, and feel how empowered you are, how powerful you are. Now, from now onwards, whenever you are in distress, though you always need a friend for a good life, but whenever you are in distress, don't go and, just rush, don't panic for that one friend in your life, because now you are friend to your own self. So you need to understand that you need to be kind and caring to your own self as well. You need to nurture yourself. You are more than enough for your own self. You need to friend yourself so that your soul can heal you up whenever you are in any distress situation.
Okay, so during, I think, questioning round, I'll be able to know, what was the stress which was written, and were participants able to do this exercise or not, right? Okay. See, another thing is that, uh, this is stress. Your emotional stress goes out of this, your physical stress also. Have you heard of this one more little exercise, which is Brahmari? We will do this exercise for the mental stress. Sometimes, we feel that there is a lot of pain, headache is there. Sometimes headache is not there, but we feel little heaviness in the head. So heaviness is there, a lot of pressure is there in the head. When we sleep, we wake up, then also we don't feel that we are fresh, and we feel that we are still stressed, and we feel sleep deprived. We feel that some heaviness is there in the mind, because emotions keep coming and going in your mind. You sleep, but sometimes your mind does not sleep. So what you need to do, we would be doing one more exercise with you, which is a Brahmari pranayam. And this pranayam, we can use this pranayam to relax the nerves of our mind. So whenever you're undergoing any kind of mental stress, you feel that your head, there is some heaviness in the head, you're not able to cope up with the situation, or you feel that you don't understand, there's a lot of confusion in the mind, you don't know what is right, wrong, lot of confusion, complete haphazard. Just do this Brahmari for 10 times, and I can assure you, you will come up fresh. All your stress, mental stress at least, will go. If you can practice, all of you, I would request, just practice 3 times with me, though you're supposed to do it 10 times, but I can understand that in on the online mechanism, I'm not able to see you, and so I don't know how effective it is to you. So we'll just do 3 times. We'll just practice 3 times. Use your thumb to close your ears. Close your ear. Okay, hear my instructions, otherwise you'll not be able to hear my instruction. So close your Aarti, ears. आप अगर अपना स्क्रीन शेयर खत्म कर देंगे तो सभी लोगों को आप देख पाएंगे. अच्छा, ठीक है सर. Hanji sir, I think I can view them now. Okay, so now see what you have to do. You have to use your this thumb. सभी close पार्टिसिपेंट your. अपना वीडियो ऑन कर लें, तभी विजिबल होंगे. जी sir. Hanji, you have to use your thumb to close your ear. ठीक है? But Abhi, let me finish off my instruction first, and then at the end you close your ear. Use your finger to close your eye, this to close your nose, and to close your mouth. So this is how you're supposed to do. You're supposed to close your mouth, you're supposed to close your nose and your eyes with this, and ear with the thumb. Now what we will do, just remove this nose finger which is there on the nose. All of you can practice this. I can see only few of you are doing it. All of you can practice this. Okay. And your ear with the thumb. Close the thumb. Okay. Only your nose is open. Your ears are closed with the thumb. Your eyes is closed. Your mouth is closed. Take a deep breath. Now exhale from the nose itself with a humming sound. Your ears are closed, your mouth is closed, humming sound coming out of the nose. Take a deep breath again with the nose. Exhale with the nose with the humming sound. One more deep breath. Exhale out with the humming sound. Concentrate on the humming sound.
Okay, rub your hands and now you can put on your eyes, open your eyes. So this is only, we have done 3 times right now, but just sense out yourself. Were you able to see that humming sound, how it has relaxed your nerves? Could you feel that? You can nod your head also if you could. Okay, sir is still doing. I think he is enjoying that. Okay. Okay, so just tell me, were you able to, your nerves got relieved because of that? Could you hear to that humming sound? Deepti ma'am, वो humming sound सुनाई दे रहा था? Okay, thank you, Arvind sir, for the confirmation. Humming sound, you were able to hear the humming sound? Okay. So this is a Brahmari pranayam, which is named after Black Indian bee. And you know, the moment you create that humming sound of the bee, this sound, when it goes to your brain, that vibrations heals your nervous system and you get relaxed. So if you will do this 10 times a day, I can assure you that your mental stress will go. You will feel more relaxed, you will feel more refreshed, and you will feel that, you know, your nerves are not that strained now. This is to relieve your mental stress. Now, Sandeep sir, can we now ask participants to, unmute themselves, because this is now an exercise which. मैम इंटरेक्टिव सेशन कर लेते हैं जिससे कि मैं अलाउ कर रहा हूँ. Okay. Now, the participant allowed to unmute themselves. आरती मैम अनम्यूट कर लीजिए एक बार अपने. Okay, as I told you that these are some tips and tricks how you can, you can lower down your physical stress or mental stress. But with this, it is very important that we have some congenial environment wherever we are working. If our workplace is a healthier place, we do generally, experience less stress. So for this, you need to have more, empowered and strong teammates with you. Team bonding should be good. Sometimes what happened, as I told you that, you need to avoid that one person. Do you remember in avoid, I told you, avoid that person. So that person is nobody, but that person is in your team only. So sometimes that person, keep coming and telling you something about you that, ye to aapne bahut hi bekar kara. Everything was good, but the event was not good because aisa ho gaya, waisa ho gaya, right? So these kind of people, you need to avoid them, and you yourself personally ensure that you are not becoming that person to somebody else. So from today onwards, rather than complaining, you need to compliment everybody, all your teammates with whomsoever you're working, and that should be spontaneous. So we'll do one exercise wherein I'll ask 2 compliment for one person, and that should be very spontaneous, should come out then and there only. Deepti ma'am, all the participants are from the same university? No ma'am. No. University. Okay, so I think I know few of them, so I'll do with them only. The moment I tell you the name of the person, you just have to tell 2 qualities, compliment. That can be any compliment, that you look beautiful, the beautiful eyes, you have a good voice, anything, but it should be there. Okay, so I'll ask Divya ma'am. Divya ma'am, about Deepti ma'am. Spontaneously, 2 words fast. You don't have time. She's hardworking. Okay. And सबके साथ मतलब congenial एक temperament. She cooperates. Okay. Yeah. She accommodates with everybody. Yes. Okay. Very nice. So Dinesh sir, Divya ma'am. Dinesh sir is here. No?
Okay, it's okay. Arvind sir is from the university. Yes, ma'am. Same. Okay, okay, Arvind sir, Deepti ma'am. Ma'am, Deepti ma'am is so beautiful and hardworking. Very nice. See, such a spontaneous comment. Deepti ma'am, are you happy that you got the compliment that you are beautiful and you are very accommodating? So very nice. Okay, Deepti ma'am, and who else? Nitin sir. Nitin sir is from the university. Yes, ma'am. Okay, Deepti ma'am to Nitin sir. नितिन सर भी बहुत हार्ड वर्किंग है और अभी हमारे यहाँ का स्टाफ क्लब संभालते हैं, तो इनमें बहुत अच्छा मैनेज करने की क्वालिटी है। ये देखी हम लोगों ने, जो जनरली लेडीज में होती है, और वो स्टाफ क्लब को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। Very nice, fantastic. Okay, so anybody else who is from the university or know each other, if you can volunteer yourself, since I don't know the participants. मैम, मैं आपके बारे में बोलना चाहती हूँ। Oh, very nice. Yes, ma'am, please go ahead. Ma'am, you look so pretty and your voice is so good and your explanation is so soothing. मुझे लगता है आपके जैसे बनने के लिए आप कुछ भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। Thank you so much, Ramakanti ma'am. Thank you so much. Thank you. मैं भी कुछ बोल सकता हूँ मैम? जी सर, बोलिए। पहले तो प्रिंसिपल मैम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ आज हम लोग को इंटरेक्ट करवाए, और दीप्ति मैम को बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मुझे ये लिंक मिला, और मैं पटना बिहार से जुड़ा हुआ हूँ और हिंदी पत्रकारिता और जनसंचार का विद्यार्थी हूँ। इसी वर्ष मेरा उत्तीर्ण हुआ हूँ। मैम, आपने जो पीपीटी शेयर करके और इतनी सारी बातें आपने बताई कि मेरे लिए एक यूनिक था। ये मुझे लगा आरती मैम कि मैं एक नया चीज आज जान रहा हूँ, जो मेरे इर्द गिर्द, वैसे तो सारा विषय जो होता है हमसे रिलेटेड होता है, हमारे जीवन शैली से रिलेटेड हुई होता है, मगर आज आपका इतना अच्छा लगा मैम। आरती मैम, मैं क्या बोलूं, जो मेरे मन के कुछ ऐसे मतलब उलझन थे, आपके वो जो पीपीटी जो शेयर करने के बाद आपने जो एक्सप्रेशन अपना जो शेयर कर रही थी, आप इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे उसमें जवाब मिल गया और मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैं चाहूंगा कि अगर वो पीपीटी हो सके तो आप मैम तक पहुंचा दे, ताकि अगर समूह में वो आ जाएगा तो मैं यहाँ बिहार के कई यूनिवर्सिटी हैं जो मेरे छात्र हैं, जो उन्हें ऐसी विषय की जरूरत होती है, वो कम से कम इस चीज को जान पाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत आरती मैम धन्यवाद। मैं पटना बिहार से जुड़ा, बहुत बहुत अच्छा लगा मैम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सोनू जी, थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड वर्ड्स। और दूसरी बात है कि अगर इस पीपीटी के माध्यम से या इस सेशन के माध्यम से अगर हम किसी को भी स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं, आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट इस सेशन से आपको बेनिफिट मिला। एंड आई विल डेफिनेटली शेयर माय पीपीटी। मैं दीप्ति मैम के साथ पीपीटी शेयर कर दूंगी। मैम, आप पार्टिसिपेंट्स के साथ पीपीटी शेयर कर सकते हैं, whosoever want, है ना। सो देखिए, ये जो एक टीम का जो ये कॉम्प्लीमेंट देने वाला जो था, ये एक्सरसाइज सिर्फ इसलिए थी दैट व्हेनेवर यू वर्क इन अ टीम यू नीड टू क्रिएट अ कंजीनियल एनवायरनमेंट। आपका आसपास का एनवायरनमेंट जब तक अच्छा नहीं होगा ना, यू विल नॉट फील लाइक वर्किंग। आपको बर्नआउट होगा, एंगेजमेंट कभी आएगा ही नहीं। यू विल फील लैक ऑफ विगरनेस, डेडिकेशन, अब्सॉर्प्शन, जीरो, नील होगा, और बर्नआउट आपका हमेशा बढ़ता जाएगा। सो प्रैक्टिस दिस। जैसे आपने आज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दिया कि यू आर हार्ड वर्किंग, यू लुक ब्यूटीफुल, या जो भी आपके कमेंट थे एक दूसरे के लिए, दैट दिस पर्सन इज वेरी अकोमोडेटिंग, ये आपके कमेंट्स थे, बट आपको एक दूसरे के लिए कभी भी पता नहीं था। तो अब आपको पता चला, तो आपकी टीम बॉन्डिंग क्या होती है, बढ़ जाती है। जब हमें किसी के व्यूज पता चलते हैं हमारे लिए, तो हमारी टीम बॉन्डिंग हमेशा स्ट्रांग होती है और हम उसके साथ आगे काम करना चाहते हैं। तो वो जो कुछ लोग हैं जो अकेले काम करना चाहते हैं, जब हम उनके साथ भी ये वाली एक्सरसाइज करें और वो लोग भी प्रैक्टिस करें कि वो सबके साथ ही एक्सरसाइज करेंगे, तो क्या होगा, हमारी बॉन्डिंग बढ़ जाएगी, एक्सेप्टेंस आ जाएगी एक दूसरे के व्यूज के लिए। द मोमेंट वी हैव एक्सेप्टेंस फॉर somebody's views, for the people, we always contribute and give our efforts. So this is something which is required and we should always practice this. If you will do it, I'm sure you all of you will come up as a good team player, and you'll be able to work congenially in your team.
So this is a team building exercise, and I would like to close the session. If you want to say something else, any queries you have, Deepti ma'am will take the query right now, or small exercise, a gratitude exercise. I'll Yeah. wind up with the gratitude exercise. हम Shall I- क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। अगर कोई हाँ, जितने भी जुड़े हुए प्रतिभागी हैं कुछ मैम से पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेरी है तो कृपया अपना माइक अनम्यूट कर लें। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। जी मैम। मैम आपने जो अभी शुरू में करवाया था प्रैक्टिस कि अगर आप टेंशन रिलीज करना चाहते हो तो फर्स्ट यू शुड फोकस ऑन योर फेस और ऑन योर शोल्डर, आप अप टू डाउनवर्ड चले थे, जबकि हम शवासन में जो टेंशन रिलीज करते हैं हम टो टू अपवर्ड चलते हैं, बॉटम टू अपवर्ड। तो क्या कोई डिफरेंस है इसमें? नहीं मैम, इट इज प्रोबेबली हो सकता है कि एडवांस और बिगिनर्स का एक डिफरेंस होगा, बट अगर आपको अपने बॉडी पार्ट्स को टेंशन रिलीव करना है, और अगर आपको सिर्फ एक अवेयरनेस लानी है कि आपका ये शोल्डर है और यहाँ से टेंशन रिलीव होनी है, सो यू कैन गो एनी ऑफ द वे। आप ऐसे भी आ सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो जनरली हम नी से एंकल से स्टार्ट करते हैं, बट क्योंकि जब बिगिनर्स होते हैं तो वहां तक लोगों के लिए पहुंचना मुश्किल होता है। आपकी ब्रीथ को अगर हम कहते हैं कि आप सीधा लेके जाओ एंकल पे, जो फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए शायद बहुत मुश्किल होगा, उनको लगेगा अरे ब्रीथ वहां तक कैसे जाएगी। तो सिर्फ हम बिगिनर्स के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि छोटे छोटे पोर्शन से दे कैन गो डाउन। अदरवाइज इफ यू आर एट द एडवांस लेवल तो आप नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू हैव दैट अवेयरनेस। ओके, थैंक यू सर। जी रमाकांति मैम। हाँ जी, एनीबडी एल्स? Okay, Deepti ma'am or anybody, can you please give me confirmation? Are you able to listen to the music? मैम अभी तो नहीं आ रहा। म्यूजिक आ रहा है अभी? No? नो मैम। नहीं आ रहा। It's okay. Don't worry. So we should not be stressed if you're not able to hear music. It's okay. This is a techno stress and it's okay. So don't get. हाँ जी मैम, सुनाई दे रहा है? हाँ, एक चीज पूछनी थी। आरती जरा अपना स्क्रीन शेयर को खत्म कर दीजिए। ओके सर, एक सेकंड। हाँ जी सर। एक चीज पूछनी थी कि जैसे आप लोग के यहाँ अभी शायद हाल में ही NAAC हुआ है, तो इस तरीके के वर्कशॉप्स आप जी मैम। अपने यूनिवर्सिटी में भी किए होंगे आपने? जी मैम जी। तो ये वाला जो पर्टिकुलर आपने अभी किया, क्या इसको भी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज के साथ किया था आपने? मैम हमने ये पर्टिकुलर ये वाला यहाँ के एम्प्लॉयज के साथ नहीं करा, बट और काफी सारी यूनिवर्सिटीज के एम्प्लॉयज के साथ करा हुआ है। बट इसमें से कुछ पार्ट एंड पोर्शन हमने बीच बीच में करा हुआ है। जैसे अपने कुछ हम स्किल डेवलपमेंट में हमारे आर्टिसंस को हमने यहाँ पे बुलाया था, तो उनकी ट्रेनिंग में, या कुछ हमने FDP MDP में, सो पार्ट एंड पोर्शन में हमने इसको करा हुआ है यहाँ पे। और इसको बड़े लेवल पे हमने। हाँ जी मैम। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आपने बताया सब कुछ, उसके बाद लोगों के क्वेरीज ली, फीडबैक फॉर्म भी हम लोग शेयर करते हैं, उसमें लोग फीडबैक दे देते हैं, लेकिन जो इस तरीके के वर्कशॉप्स का आउटकम है, जो कि आजकल जमाना है आउटकम बेस्ड एजुकेशन का, या फिर जैसे NAAC भी कहता है कि आप ठीक है आपने वर्कशॉप करा लिया, लेकिन इसका जो आउटकम है वो क्या निकला, तो क्या उस फील्ड में भी आप कुछ काम कराती हैं आफ्टर दिस वर्कशॉप, सो दैट दिस वर्कशॉप इज एक्चुअली फ्रूटफुल फॉर पीपल? जैसे आपने अभी एट रैंडम पूछा कि आप किसी के भी 2 अच्छाइयाँ बताइए या बुराइयां बताइए, तो अगर ये एक्सरसाइज सबके लिए हो जिसमें कि सब लोग बिना नाम लिखे हुए सबकी अच्छाइयाँ बुराइयां अगर बताएं, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर। हाँ जी मैम, वी कैन डू दिस। अभी जैसे राइट मैम, इसमें ये कर सकते हैं कि आपके जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप उनका कुछ एक और हम सेशन कर लेंगे टीम बिल्डिंग रिलेटेड, जिसमें हम मतलब कुछ एक इंटरवीनिंग एक्सरसाइज करेंगे, वेयर वी विल कम टू नो दैट हाउ दे वर रिस्पॉन्डिंग अर्लियर एंड हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग नाउ। या फिर अगर हम स्ट्रेस रिलेटेड पूछें तो हम स्ट्रेस रिलेटेड भी देख सकते हैं कि जैसे किसी को कुछ स्ट्रेस था पहले, एज आई टोल्ड यू कि लोगों ने कुछ स्ट्रेस एक पीस ऑफ पेपर पे लिखे, स्ट्रेस है ना,
तो उसका एक ये हो सकता है कि उसके बाद हम देखें क्या उनका वो स्ट्रेस कम हुआ है बिकॉज ऑफ द टेक्निक्स विच हैव बीन शेयर्ड विद देम। उनकी प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर करेंगे वो मतलब आप इंटरनल आपका एक मैकेनिज्म है कि आप ये देख सकते हैं कि ऐसे 1-2 सेशंस के बाद क्या उनकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो रही है, क्या उनका परफॉर्मेंस कुछ बेटर हुआ है। सो दैट्स हाउ हम आउटकम को सिर्फ कोरिलेट ही कर सकते हैं। अगर हम कहें कि बहुत कंक्रीट वे से, सो आई डाउट इतना कंक्रीट नहीं हो पाएगा, बट हम इसको कोरिलेट कर पाएंगे। नहीं, जैसे आउटकम तो इज समथिंग व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड इन कॉन्क्रीट टर्म्स ना। राइट कैसे मेजर करेंगे कि हाँ कल कोई आदमी इतना काम कर रहा था, आज इस सेशन के बाद उसका काम डबल हो गया, ये मेजर करना तो मुश्किल है। हाँ, लेकिन वही जैसे मान लीजिए टीम बिल्डिंग के लिए अगर किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है जो कि वो आदमी रियलाइज नहीं करता है, तो वो चीज अगर रिटन में हो तो मुझे लगता है कि हर आदमी को अगर अपनी अच्छाइयों बुराइयों के बारे में पता चले तो आदमी जो चाहे अपने को इम्प्रूव करना वो कर सकता है। क्योंकि आप एट रैंडम वर्बली पूछेंगे तो हर आदमी के सामने, अब आप किसी से पूछोगे कि मतलब मेरे में क्या बुराइयां हैं, तो शायद लोग नहीं बोलेंगे, है ना। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर यही चीज रिटन में हो तो वो चीज बिना नाम लिखे हुए आदमी डाल सकता है और फिर वो चीजें आपस में शेयर की जा सकती हैं, सो दैट आदमी अपने आप को इम्प्रूव कर सके फॉर बेटर टीम बिल्डिंग। हाँ, सो मैम वो उसके लिए हम ना जो हारी विंडो वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, उसके साथ कोरिलेट करके एक्सरसाइज कर सकते हैं कि जिसमें उनको नहीं पता वो वाला रैंडम चिट्स डाल दिया, फिर चिट्स खोली तो पता चला कि आपकी एक ये वाला एरिया है जो आपको नहीं पता, फिर धीरे धीरे वो खुद प्रैक्टिस करे कि उसको कैसे रिड्यूस कर पाए। तो कुछ मतलब डिफरेंट टेक्निक से हम कर सकते हैं, बट अगर हम इसको बोले कि हम इसका नंबर से आउटकम देखें तो ये बिहेवियरल ट्रेनिंग, ये सारी ट्रेनिंग इसका नंबर से तो हम नहीं निकाल सकते। बट नंबर से मैं निकालने का कह भी नहीं रही, लेकिन मैं बस ये पूछ रही हूँ कि आप लोग जब अपनी यूनिवर्सिटी में करते हैं इस तरीके के वर्कशॉप, तो क्या उसको आउटकम बेस्ड करते हैं या फिर इसी तरीके से सेशन करके फीडबैक लेके खत्म कर दिया? जैसे आपके यहाँ अभी A+ ग्रेड मिला हुआ है, तो मैं वही जानना चाह रही हूँ आप लोग हर चीज आउटकम बेस्ड करते हैं, उसके आउटकम को रिकॉर्ड करते हैं या फिर नहीं करते? दैट इज माय क्वेरी। मैम हर एक का आउटकम बेस्ड नहीं होता, जो बिहेवियर वाले होते हैं उसका फीडबैक तक ही सीमित होता है। कुछ होते हैं सिर्फ जिसमें हम आउटकम बेस्ड करते हैं, बट हर एक का आउटकम बेस्ड नहीं होता। फीडबैक एंड देन क्लोज। अगर फिर किसी का पर्सनल कुछ और आगे कुछ इंटरवेंशन चाहिए देन वी माइट टेक, बट जनरली फीडबैक पे ही हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो टीम बिल्डिंग में मतलब फिर फीडबैक पे ही आप क्लोज करते हैं, उसके आगे फिर कुछ नहीं करते? टीम बिल्डिंग का अगर वर्कशॉप हो तो आप फीडबैक पे ही क्लोज करते हैं या आउटकम बेस्ड तक जाते हैं? नहीं मैम, आउटकम बेस्ड में वहां पे भी नहीं जाते। जनरली उसको भी हम लोग फीडबैक और फिर उसका बस ईसीआर बना देते हैं। दैट्स हाउ वी क्लोज द इवेंट। ओके, थैंक यू। आई थिंक हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, दीप्ति मैम, है ना? जी मैम। Okay. So the last thing, as I told you, thank you so much for your queries, first of all. And since we are running, short of time, we just have 5 minutes. So I'll just tell you in 3 minutes how you're supposed to give gratitude to the people. You simply need to close your eyes. All of you close your eyes, take a deep breath, feel the power of the environment, feel the power of the trees, plants. With the deep breath, just give gratitude to your surrounding, to the trees, to the plants, to the beautiful flowers around you. Give gratitude to the beautiful colors around you. Give gratitude to the water which is flowing around you. Give gratitude to the birds, to the animals, the sound that you can hear in your surroundings. Deep breathe again. Give gratitude to each and every body part. You need to say thank you to your heart, to your lungs, to your kidneys, to your abdomen, to your arms, to your legs, to your fingers,
to your eyes, to your nose, to your throat, to your lips, to your tongue, to your neck, to your shoulder, to your head, each and everything. You need to give gratitude that they are functioning well, they are supporting you in your daily routine tasks, they're supporting you to make your life more easier. You need to give gratitude to your colleagues which are working with you. Biggest gratitude to the God for the good job, for the good food. You're working every day, you're able to earn every day. The relationship, the money, the fame, you're able to earn everything every day. So gratitude to each and every person we have crossed in our lifespan. Gratitude to our parents, gratitude to our kids, gratitude to our spouse, gratitude to the friends, relatives, gratitude to everybody whom we cannot recall right now. Gratitude to the universe, gratitude to your surrounding, gratitude to each and everything in your life. Since you are blessed, so be thankful to each and everything you're getting in your life. Gratitude to God and gratitude to your own self. Rub your hands, put it on your eyes, open your eyes slowly. And now feel the power of gratitude. The moment you pay gratitude to your own self, to your surrounding, to the people you surrounded by you, you feel more positive. You are empowering yourself and you are empowering your surrounding as well. So if you are empowered, your surrounding is empowered, you feel more positive, and with this, you can work in the team and you can stay happy at your workplace, in your personal life as well. Okay. Thank you so much. We're done with the session. Deepti ma'am, any other queries or anything, you can just let me know. No ma'am, thank you ma'am, thank you so much. बहुत ही सुंदर सेशन रहा, और कई बार हम लोग चीजों को जानते हैं लेकिन उसे सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं उसका कर पाते। और एक जो बड़ी चीज आपने लास्ट में बताई ग्रेटिट्यूड वाली, कि हम जो नहीं है उससे हमेशा असंतोष में रहते हैं और शिकायत करते रहते हैं, पर जो है उसके प्रति कभी कृतज्ञता नहीं जाहिर करते, या उसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं समझते, ग्रेटिट्यूड नहीं देते ईश्वर को, अपने आसपास के लोगों को जो वो अच्छा हमारे लिए करते हैं। जो कमी करते हैं बस हमें वही चीजें याद रहती हैं, और शायद स्ट्रेस का ये सबसे बड़ा कारण है। तो ये सीखा हम लोगों ने, और नेचुरली सभी लोगों आपकी इस बात से सहमत होंगे और लाभान्वित होंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित कर रही हूँ IQAC सदस्य डॉक्टर अरविंद कुमार यादव जी को। डॉक्टर अरविंद यादव, ओवर टू यू। थैंक यू दीप्ति मैम। कभी कभी जब हम लोग वर्कशॉप करते हैं तो दो तरह की फीलिंग आती है। एक तो ये रहता है कि जबरदस्त चल रही है, और एक दूसरा होता है कि जबरदस्ती चल रही है। तो इतनी अच्छी वर्कशॉप थी ये, इतनी जबरदस्त लगी, मतलब पूरा 1 घंटा पता नहीं लगा कि कहाँ चला गया, मुझे भी नहीं पता कि 1 से 1.5 हो गया हो, कितना टाइम है देखा भी नहीं, उठ भी नहीं पाया मैं यहाँ से। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आरती मैम का। बहुत अच्छे तरीके से म्यूजिक चलता है उस टाइप से की फीलिंग हो रही थी, और बीच में जो मैम ने एक्सरसाइज कराई, और करते रहते हैं हम योली एक्सरसाइज, और मैम बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Arvind sir. Thank you, Deepti ma'am, Sandeep sir, all the participants, Divya ma'am, for giving me this opportunity. And I really enjoyed the session with so many participants. And if I can change your life even a bit, I'll really feel, great for that. Thank you so much for giving me the opportunity. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. मुझे लगता है अरविंद जी अभी धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में और लोगों को भी धन्यवाद देना चाह रहे हैं, तो हम सुन लेते हैं। हाँ जी। और दूसरे नंबर जो हमारी प्राचार्य मैम है दिव्या मैम, इतना सोचती हैं हमारे बारे में, और नए नए सब्जेक्ट्स पे, क्योंकि बैक टू बैक स्ट्रेस चल रहा है हमारे यहाँ भी। तो मैम ने इससे पहले भी जो वर्कशॉप हुई थी वो भी हमारी श्री श्री योगा से आए थे और उन्होंने बहुत अच्छी कराई वो भी योगा, और उसमें भी हम लोगों ने सबने बहुत एंजॉय किया था कॉलेज में।
और ये वाली वर्कशॉप जो थी टीम बिल्डिंग के ऊपर, थैंक यू सो मच दिव्यानाथ मैम का कि मैम हमारे बारे में इतना सोचती हैं और समय समय पर हमारे लिए इस टाइप की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाती रहती है। इसके बाद मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा IQAC की कन्वीनर दीप्ति मैम का। दीप्ति मैम भी लगातार इस टाइप के वर्कशॉप में लगी रहती हैं और देखती रहती हैं किस टाइप की अपॉर्चुनिटी मिले, कितना कब हम कराएं, और थैंक यू सो मच मैम। और सबसे ज्यादा जो आभार व्यक्त करूंगा मैं सारे पार्टिसिपेंट्स का, क्योंकि मैं देख रहा था बीच बीच में चेक कर रहा था, सब लोग बहुत धैर्य से एंजॉय कर रहे थे पूरी वर्कशॉप को, और इसी तरह आप लोग एंजॉय करें, हम लोगों का साथ देते रहें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Arvind ji.